Fashion is not a plan, it's not a hobby or a... How do I say this? You have no idea how much this means to me. Buy another wedding lehenga. Dude, मैं और long distance नहीं करना चाहती क्योंकि मुझे पता था मैं चीखूंगी चिल्लाऊंगी मैं बहुत रोती हूँ. और मेरा नेकलेस से छुप जा रहा है. ऑफ शोल्डर बनाने की कोशिश पक्का उठ जाएगा. ऐसे रखते हैं उसको. ठीक है. Hi my sunflowers, welcome back to the channel. This is Ishita with 2 E's and I cannot believe it. हम अपनी Q&A की स्ट्रीक मेंटेन कर रहे हैं. मिडवे दिस ईयर वी डिसाइडेड कि हम हर 2 महीने तो करेंगे एक. एंड आई थिंक लास्ट 6 months में दिस वुड बी द 3rd और 4th Q&A that we're doing. So yay! Also, yes, I've tried looking like a Santa. I wanted to make this, chatty sa video, especially for Christmas and to just end the year on a nice casual note. मैंने यहाँ पे candle भी जलाई है, which is smelling really nice. It's a new one that somebody gifted me. Let me show you. इसकी packaging is so good and it has that very citrusy सा fragrance. I really like it. क्यों बताया मैंने ये सब मुझे नहीं पता. I've also done my makeup so differently. If you can see, I never do a liner. The red lipstick, oh my god, पहले इतनी loud थी. I had to go on with a nude lipstick over it. थोड़ी सी brown tone. तो ये ऐसा color हो गया है. I think first things first, Merry Christmas and a very Happy New Year to all of you watching me. Thank you for supporting me through my possibly the worst year of my life. It hasn't been very good. But I'm truly blessed for the people who have still stuck by me as a viewer. You have no idea how much this means to me. But मैं already next year के लिए काफ़ी positive feel कर रही हूँ. I'm doing everything that I can. I'm feeling that positivity inside me after a really long time. So yeah, thank you for sticking by and you'll get some really warm content in the next year. And इसी के साथ let's start with the video. I don't know ये कितनी लंबी होगी. मैं बहुत chatty mood में हूँ तो I'm guessing काफ़ी लंबी हो सकती है. So yeah, grab a coffee or something to snack on and let's start. Wow. पहला question is, it's unrelated but I am thinking of taking therapy. Do they give you exercise or medicines? So okay, 2 तरीके के therapists होते हैं और maybe I don't know, mental health से related 2 streams होती हैं. I feel one is psychology and one is psychiatry. तो psychiatrist आपको medicines दे सकते हैं. Psychology is always, they give you mental exercises, they give you tricks and ways जिससे आप अपने thoughts को challenge कर सकते हो, change कर सकते हो, how you are built to think about things. I am very proud of you that you're thinking of taking therapy. It takes a lot of guts in our society to even accept the fact that हाँ, you're suffering mentally. It is not something that you can manage on your own or you can rely on your friends to get you by. And I'm just proud of you. If you need any help, let me know. Next question is most challenging phase of YouTube till date. By the way, I adore you XOXO and a heart. So I think the most challenging phase, मुझे हमेशा लगता था मेरी job और YouTube को manage करना रहेगा, उसके बाद तो life would be easy. But 2022 had different plans altogether. I think I felt very disconnected this year with my career, with my life online. मैं इतना अपनी personal life में involve हो चुकी थी. I was so in my head for so many reasons that I was completely disconnected with what was happening on YouTube. मुझे क्या कुछ करना चाहिए. So many people have grown because of shorts. And मैंने कभी shorts को भाव नहीं दिया. होता है ना कभी कभी when you're not feeling your best mentally, you just can't do things physically as well. मेरे साथ तो यही हुआ. It impacted me physically very badly and yeah, the first phase of my YouTube career has to be this year and I want to make up for it next year. Hi, I was just wondering that have you taken the interviews for your team? If you guys don't know already, I am trying to grow my team and मैंने ना बहुत डर के Google form बनाया था बहुत पहले और उसे finally December 1st week पे share कर दिया था and I was like कोई नहीं करने वाला है. I'm pretty sure मैं खुद का मोरल खुद ही डाउन कर लेती हूँ कभी कभी and we got above 70 entries. I am still shocked कि इतने सारे लोगों ने just they even thought of working with me. I am truly blessed. I went through each and every entry. I have notes about each entry as well. Right now, as of now, I am confused about 2 people and they both bring very different energies. They both have very different skill sets as well. So I'm confused कि उनमें से किसको choose करना चाहिए. As of now, I am in that dilemma. But yeah, I'm done with the interviews. I don't think so I'm gonna take any more interviews. You said this Rakhi was your last Rakhi. मुझे पता था ये question आएगा. I think किसी और ने भी पूछा है. Can you please share if it's okay to share for you and your bhai? Love you. Love you too. Thank you for being so considerate about us.
So this year, beginning of this year, मेरे भाई ने decide किया that he wants to go abroad for his graduation. आधा साल उसी की preparation में निकल गया. You know, there's visa forms, there's also consultation कि आप कौन से graduation courses के लिए जा सकते हो. मेरी जो पौंडीचेरी वाली trip बहुत impromptu थी. Like literally 2 दिन में I booked the tickets and I just left with my brother. मैंने वो सिर्फ इसलिए किया because I knew कि मेरा भाई चला जाएगा and then we will not get to see each other as frequently. But I think life had very different plans for him. His visa got rejected for the second time. So उस time पे we all mutually decided कि I think it's better if he does his graduation from India itself because third time भी apply करना didn't seem fruitful. So I think this year has been very tough for my brother as well because when you decide with your heart and mind कि हाँ 6 महीने में you are going to leave the country and you will have this very different life altogether and आप जितना भी अपनी excitement को control करो but दिमाग में वो plans बनते ही रहते हैं and I felt so bad for him कि उसका visa reject हो गया. It was not his fault. I think मैं भी लखनऊ में इसलिए टिकी हुई थी because we thought जुलाई और अगस्त तक तो ये चला ही जाएगा. So उसके बाद I'll move on. जब हमने second time visa के लिए apply किया तब ऐसा होता कि ओके डेफर करवा लेते हैं नेक्स्ट सेमेस्टर में ज्वाइन कर लेगा. तो जनवरी में उसका सेमेस्टर स्टार्ट होता. तब आई डिसाइडेड कि लेट्स जस्ट स्टार्ट लुकिंग फॉर हाउसेज इन गुड़गांव. वीज़ा का अप्रूवल्स होता रहेगा एंड while we were looking for houses in Delhi तभी उसका second time visa reject हो गया and I was so heartbroken. I felt so bad for him. I know it was a very very tough time for my brother as well. He's been very very strong. So yeah, this is what was up. So अभी वो मेरे साथ रह रहा है. I know काफ़ी लोगों को confusion है कि क्या हो रहा है. अभी he is staying with me and the poor baby has to travel from Gurgaon all the way to Noida every single day. But we are planning कि वो next semester which is gonna be March में he's gonna move out as well and फिर मैं यहाँ पे अकेले रहने वाली हूँ which is going to be hard. But it's okay, I think I'll manage. ये questions मुझे बहुत टाइम से आ रहे थे like राखी वाले टाइम के बाद से कि why did you say last राखी है. उस टाइम पे इतने rejections हो रहे थे लाइफ में मुझे ऐसा लगता है मैं जिस चीज़ के लिए प्लान कर रही हूँ and the moment I share it with somebody वो तभी रिजेक्ट हो जाता था या कुछ कैंसिल हो जाता था. तो मेरे अंदर भी ना एक सुपरस्टिशन सा हो गया था कि okay maybe I shouldn't share until it all works out. इसलिए मैं ट्रिप वगैरह का भी बहुत डीले में कर रही हूँ. मैंने पौंडीचेरी का तो व्लॉग ही नहीं डाला बिकॉज उस पूरे व्लॉग में ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट इज दैट ओ दिस इज माई लास्ट ट्रिप विद माई ब्रदर एंड उसी टाइम पे फर्स्ट रिजेक्शन आ गया था. उसी टाइम पे आई वेंट थ्रू अ लॉट. उसी टाइम पे मेरा वीज़ा भी रिजेक्ट हो गया था. सो यू नो पूरा मोमेंट वो पूरा 3-4 महीने हैव बीन सो मैं क्या ही बताऊँ यार. डू यू हैव एनी प्लान टू विजिट मॉरिशस? I think मैं अभी तो वियतनाम से आई हूँ. I don't have any plans to travel as of now. अब मैं जब तक अपने सारे pending travel logs नहीं डाल देती, I am not going to take another trip. I know you guys have been waiting for the second part of Goa, Pondicherry and Vietnam. I'm gonna do it. January is going to be happening. बाद में plan करेंगे Mauritius के लिए. Finally going to file ESEP and will start new chapter of my life. I will definitely miss Infosys a lot. #first job. Oh my god. Congratulations Harshu on making the switch. It's a very very big step. I never got to do it. मैं अपनी first job से सीधे YouTube पे आ गई. In a sense this is my second job. But congratulations. I know first job is always closer to our hearts and Infosys की training वाला period is so lovely and so happening ना. Nothing matches up to that hype. And I also feel कि आप जब जैसे जैसे switch करते रहोगे वैसे वैसे आपके ऊपर responsibilities और आती रहेंगी. तो वो जो fresher वाला time है ना वो इतना fun होता है वो कभी repeat नहीं होगा life में. So but yeah, all the best in your new job and new role. Do you get bikini wax done? I saw your bikini post. I just love it. You look so cute. Oh, thank you. So I usually shave everywhere. I'm a very very hairy person. मतलब मेरे कोई body part नहीं होगा जहाँ बाल नहीं होगा, including the knuckles and the toes, all 10 of them. But I go for a bikini wax only and only when I have to travel. जैसे मैं पौंडी गई, आई न्यू बीच वगैरह पे जाऊंगी तो मैंने करवा लिया शेव. गोवा से पहले करवाया. फर्स्ट टाइम आई थिंक मैंने बाली से पहले कराया था. वेन एवर आई नो आई हैव टू गो टू अ बीच एंड आई एम प्लानिंग कि हाँ मैं स्विमिंग का कुछ पहनूंगी तो आई जस्ट गेट द बिकिनी वैक्स डन. एंड आई थिंक 2-3-4 साल हो चुके हैं जब से मैं कर रही हूँ तो आई एम गॉटन यूज्ड टू इट. लाइक ट्रस्ट मी इस बार जब मैंने करवाया अपने बर्थडे के नेक्स्ट डे आई थिंक दैट लेडी वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल अमेजिंग. लाइक शी वॉज टू गुड. लिटरली आई एम नॉट किडिंग 4 मिनट में माई बिकिनी एरिया वॉज डन. एंड पूरी लाइफ में दिस वॉज द लीस्ट
पेनफुल एक्सपीरियंस दैट आई हैड। मेरे फ्रेंड्स मेरे घर पे थे, मैंने उनको स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि बाहर म्यूजिक चला के रखना ताकि मैं अंदर वैक्सिंग वगैरह करवा लूँ, क्योंकि मुझे पता था मैं चीखूंगी चिल्लाऊंगी, मैं बहुत रोती हूँ। बट इस बार इतनी जल्दी क्विकली आई वॉज जस्ट डन विद द होल थिंग। Even I was shocked, but need motivation because I have so much face fat and uneven body. What should I do to look sexy and hot? Okay, I'm just gonna be very honest with you. Do you not consider I also have a lot of face fat and uneven body fat as well? Not conventionally जो social media में acceptable bodies होती है वैसी तो मेरी body बिल्कुल भी नहीं है, but I still feel hot and sexy and just whatever I feel, whatever I want to. Sexiness is being confident in what you're wearing. Yeah, that is all. This is it. This is the only thing that I want to convey. It's how you carry the dress that you want to. मैं एक चीज बोलूँगी, if your current clothes are not fitting you, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके ना पुराने कपड़े just because they don't fit you, तो you kind of sort of start feeling bad about your body. I will suggest once in a while splurge and buy something that is according to your current size. It's gonna help a lot in feeling better about your body. आपको अपने कपड़ों में नहीं घुसना होता है, आपके कपड़े are supposed to be according to your size. I think 6 महीने पहले I would still try to fit into M, क्योंकि मैं उतना L size में भी नहीं आई थी. Like L would still be loose on me, but M फिर भी tight होता था. And अब तो मैं और 10 किलो भारी हो चुकी हूँ. अब I completely fit into L. कभी कभी तो एक्सेल भी हो जाती हूँ एंड आई फील गुड अबाउट इट बिकॉज आई एम फाइनली वेयरिंग द साइज दैट फील्स गुड ऑन माई बॉडी एंड दैट ऑल्सो हेल्प्स मी इन फीलिंग कॉन्फिडेंट. वेयर वॉट यू वॉन्ट टू, एकदम फुल ऑन कॉन्फिडेंस के साथ. एंड आई एम टेलिंग यू, यू आर सेक्सी. मैं जितना थंबनेल में देख पा रही हूँ, यू आर गॉर्जियस. जिसने भी तुमको बोला है कि यू आर नॉट सेक्सी एंड हॉट, उसको भाड़ में जाने दो. वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years? बाय द वे, लॉट्स ऑफ लव टू यू. थैंक यू, थैंक यू. I think 5 साल में I definitely do see me still relevant on online. Like किसी तो platform पे, I don't know YouTube होगा कि नहीं. So yeah, I still want to be doing what I'm doing right now. And I would really like if I'm living with my partner. जो भी होगा उस टाइम पे मेरा पार्टनर, अभी के लिए हर्षित है. तो yeah, I would really finally love that. At least, dude, मैं और long distance नहीं करना चाहती थी. I finally get to be with my partner. I get to be with him. And yeah, I want to have that live-in वाला सुख जिंदगी में. I think मेरी लाइफ में मैरिज की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है. So as long as I get to be in a live-in with that person, with my partner, I'll be happy. Your marriage plans with Harshit Jiju. कोई प्लान्स नहीं बेब, कोई प्लान्स नहीं. I'm so sorry. And I think मैंने वो लहंगा वाला फोटो डाल दिया था and वो रील्स डाल दी थी, तो लोगों को लग रहा है कि कुछ लोगों को लग रहा है कि I might be getting married. ऐसा कुछ नहीं है. That was I went there for a shoot. मुझे लहंगा पहनना बहुत पसंद है, तो I was just having fun. यार तुमको शूट पे जाने को मिल रहा है and you can free में try bridal लहंगास, like pretty bridal लहंगास, तो कौन ये नहीं करेगा. And जो मैंने वो मेरी ड्रीम लहंगा वाली रील डाली थी, मुझे उस रील को डालने के बाद सबने मैसेज किया एंड बताया कि ओके, दैट हैज बिन द वायरल ट्रेंड ऑफ 2022 वेडिंग्स. मैंने एक लड़की ने ये भी कमेंट किया कि शी वाज गोइंग टू वेयर दैट फॉर हर वेडिंग, बट जब उन्होंने देखा कि एक्चुअली वो कितना वायरल हो चुका है, तो शी डिसाइडेड टू बाय अनदर वेडिंग लहंगा एट द वेरी लास्ट मोमेंट. एंड उन्होंने वो लहंगा अपनी मेहंदी पे पहना विद अ डिफरेंट ब्लाउज. सो आई हैड नो क्लू कि वो इतना वायरल हो चुका है, फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड सेकेंड ऑफ ऑल, मेरी शादी नहीं हो रही है. एंड अगर हो भी रही होती, आई थिंक आई वुड हैव बीन ओके विद वेयरिंग अ कॉमन लहंगा as long as I feel pretty in that लहंगा. because मैंने 3 कलर के लहंगे ट्राई किए थे, एक मस्टर्ड, एक रेड, एंड वन वाज दिस मरून एंड बेज का मिक्स. I felt the prettiest in the maroon one with the double dupatta thing. As long as you feel pretty in it, I think ये सारी चीजें मैटर नहीं करनी चाहिए. 27 and still haven't found my passion. What to do? I think इसका जवाब मैं पानी पीने के बाद दूंगी. Let's take a water break. Okay, so I'm so sorry, but मैं इस टॉपिक के बारे में थोड़ा बात करूंगी, but थोड़ा डिटूर करके करूंगी. I think 2018 या 17 में we were during our training period in Infosys, we had a language का training session as well, जहाँ पे हर एक बंदे को from my batch had to give a lecture or sort of just had to give a short speech. Basically तुम्हारा confidence and English speaking skills check करेंगे. And I remember everybody almost touched something technical or something related to the current affairs. And me being me, I went up and talked about how passion is overrated. Mind you, this was when I did have a YouTube channel, but मैंने 1 साल तक उस पर कोई काम नहीं किया था. मैंने बस कॉलेज में स्टार्ट कर दिया था एंड 1 साल बाद जॉब करने के बाद I began working on my YouTube channel. So उस टाइम पे मैंने जितनी रिसर्च और जितना पढ़ा था उस टॉपिक पे, like I already knew what I felt about this topic, but
पता नहीं क्यों मैं इतनी अम्मा वाला को टॉपिक लेके गई थी तब। I realized I'm even more confused because now I'm stuck at one point. That is passion. But now I was confused what my passion is. उस टाइम पे मैंने एक कोट पढ़ा था या फिर सुना था कहीं, दैट पैशन इज, वी ऑफन कंसिडर पैशन टू बी अ थिंग, बट इट्स नॉट अ थिंग, इट्स your feeling. It's a sense of, it's just a feeling that you might feel towards some people, towards some part of your life or a particular thing. Passion is not a plan, it's not a hobby or a sport. It's a feeling. It's the full attention and energy that And the most constant thing about a feeling is that it keeps on changing. So I know we all, I think specifically millennials have been in this rut of finding our passions and making it our side hustle and then eventually going and taking that leap and finally usko apna full-time job bulana, which is the theory of my life, which is the story of my life. Of course, kuch logon ke liye passion comes from their hobbies and side hustles. But iska matlab ye nahi ki sabke liye it will remain true. Also, even if you find something that you're extremely passionate about, I'm telling you, 3 साल 4 साल बाद it will change. You will not be feeling the same drive that you feel right now or maybe पहले feel करते थे. So मैं बस यही बोलूँगी, don't waste your time worrying about कि how you haven't found the passion. Instead what you can do is अभी आपकी जो current life है या current job है, आप उस पर थोड़ा और focus कर सकते हो. You can keep on putting in more and more efforts every day, I'm telling you. And I'm telling you, आपकी जो भी life है, जो भी job या जो भी areas है, they will improve and they will make you feel sort of satisfied with your life. मुझे लगता है काफ़ी सारे लोग आर नॉट हैप्पी विद देयर लाइफ बिकॉज दे हैव दिस आइडिया अबाउट पैशंस कि अगर मैंने एक दिन पैशन अपना फिगर आउट कर लिया और मैं उसको फॉलो करने लग गया तो लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी. ऐसा कुछ नहीं है. लाइफ विल स्टिल बी हार्ड एंड यू विल स्टिल हैव टू पुट इन द सेम अमाउंट ऑफ एफर्ट्स जो आप अभी अपनी नॉट सो फेवरेट जॉब में कर रहे हो. मैंने YouTube फॉलो किया एंड इट टेक्स अ लॉट आउट ऑफ मी. इस पूरे साल मैंने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में ही एक्सेप्ट किया है कि इट वॉज वेरी वेरी हार्ड फॉर मी टू जस्ट रन दिस चैनल, जस्ट टू बी एक्टिव ऑन दिस चैनल. एंड मैंने फाइनली ब्रेक भी लिया था बिकॉज आई कुडंट मैनेज इट. सो या, पैशन डजंट मेक योर लाइफ ईजी एट ऑल. पैशन बहुत ओवररेटेड कॉन्सेप्ट है. यू डिड आस्क मी व्हाट टू डू. आई वुड से एक्सपेरिमेंट विद अदर थिंग्स अलॉन्ग विद योर करंट जॉब और स्टडीज. यू नेवर नो, समथिंग माइट क्लिक or something might get you a better opportunity. नई नई चीज़ें ट्राई करते हुए नई नई अपॉर्चुनिटीज आती हैं and you might make something really good out of your life. How is your health? You seem to be falling very sick. You seem to be falling sick very frequently. How about your mental health? Love, heart. I love you too. भाई ये तो सच में सच है कि मैं जब से गुड़गांव आई हूँ I have been falling sick like ऑलमोस्ट एवरी अदर वीक. इस घर में हमेशा पैरासीटामोल रहती है, हमेशा कफ सिरप रहते हैं. मेरे साइड टेबल पे कफ सिरप रहती है, मेरी वैनिटी पे कफ सिरप रहते हैं, मेरे लिविंग रूम में भी कफ सिरप रहते हैं. एंड आई हैव सो मेनी वो स्ट्रेप्सिल्स एंड ऑल एंड विक्स पड़े रहते हैं घर में क्योंकि गला तो कॉन्स्टेंटली खराब है. एंड अगर जिस हफ्ते मैं अच्छा फील कर रही हूँ उस हफ्ते मेरा भाई बीमार पड़ जाता है. समहाउ गुड़गांव जस्ट डजंट फील स्टिल लाइक होम बिकॉज मैं बीमार पड़ती रहती हूँ. अ लिटिल बिट ऑफ दैट हैज टू बी ऑन मी एज वेल बिकॉज आई हैव बीन पार्टिंग अ लॉट. मुझे लगता है मैं हर हफ्ते 2 बार तो आई एम ड्रिंकिंग विद माई फ्रेंड्स एंड इट इज गोइंग अ लिटिल आउट ऑफ हैंड. बट फॉर पीपल हु आस्क्ड अबाउट माई मेंटल हेल्थ, ऑफ कोर्स मेरी लाइफ के जो इश्यूज है वो सॉल्व तो नहीं हुए हैं कहीं भी. हाउ डू आई से दिस? आई एम डूइंग मच बेटर. आई एम डूइंग वे बेटर एक्चुअली. आई हैव बीन टेकिंग थेरेपी सिंस अप्रैल एंड मेरी लाइफ में पहली बार इन 8 महीनों में पहली बार ऐसी एक फीलिंग आई मेरे अंदर दैट ओके, I do not need a therapy session this week. And मेरा last session actually November end में हुआ था and then it happened this week. So I took a break, a long break as well, and I was feeling okay with things. I guess I'm doing very, very better, like much better. I'm in a much better place mentally. Of course, there are triggers and I have to make peace with them and I have to learn how to live with those triggers. But so far, I can see a lot of improvement in me. Like, हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिनसे मैंने डील करना फाइनली थेरेपी से सीख ही लिया है. लाइक आई थिंक मेरी मेंटल हेल्थ इज ऑल गुड, फिजिकल हेल्थ इज नॉट दैट गुड एंड आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ. यार बॉडी एंड ऑल तो एकदम खटारा हो चुका है. Oh my god, next question is my favorite. Do you also use your phone while pooping? Just curious. So Sakshi, trust me, I take my phone एवरीवेयर. इस घर में अगर मैं अपना खाना गर्म करने के लिए किचन भी जा रही हूँ ना तो भी मैं अपना फोन लेके जाती हूँ किचन में. आई विल प्लेस इट लाइक दिस. कभी कभी तो व्लॉग कर रही होती हूँ फोन से तो वो लेके जाती हूँ, वरना इसमें कुछ ना कुछ चल रहा होगा, कोई यूट्यूब चैनल, कोई नेटफ्लिक्स का शो, एंड आई विल कीप ऑन वॉचिंग दैट
while doing my chores. So while pooping, so this has to be there. When are you planning to come to Bangalore? I had my plans to come. I really had like concrete plans of coming to Bangalore. But abhi wo thode ऐसे डोल रहे हैं. One of my very close friends has moved to Bangalore. So I really am planning to meet her and visit her. We figure out कर रहे हैं. होगा. I think Bangalore होगा. Can we ever get on the same page as our parents? What is your thought on this? I think we can be on the same page with anybody in this world as long as the other person is also ready to listen to you and is ready to acknowledge your thoughts and your opinions and ready to change internally. आप किसी के भी सामने चीख सकते हो, चिल्ला सकते हो, पूरी लाइफ निकाल सकते हो, but if that person isn't ready to change, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. Talking about parents, हमारे और उस जनरेशन में इतना गैप है. We'll have to make a lot of changes to come to our level. तो इसलिए हमेशा वो थोड़ा एक डिफरेंस रहता है. But I have seen parents who are ready to change and ready to accept how their kids want their lives to be. Basically, they try to move on with the current generation. होता है, but हाँ, सबकी जिंदगी में नहीं लिखा होता है सब. Are you not talking to your parents? ये कैसा रिश्तेदारों वाला सवाल है. आई डोंट नो. ऐसा नहीं है. टॉक टू देम. यू कांट लीव योर पेरेंट्स एवर. ऐसा कुछ भी नहीं. आई हैवंट लेफ्ट माय पेरेंट्स. प्लीज. व्हाट्स द प्लान फॉर न्यू ईयर? आई हैव नो प्लान्स एक्चुअली. आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली हम हाउस पार्टी कर रहे होंगे बिकॉज आई डोंट थिंक सो आई हैव इट इन मी कि मैं बाहर जाके क्लब या पार्टी करूँ. द लास्ट टाइम आई डिड दिस वाज इन पुणे एंड मैं अभी तक उस पार्टी को रिग्रेट करती हूँ. उससे ज़्यादा वो इतना केओटिक टाइम होता है, इतनी भीड़ होती है. इवन द ड्रिंक्स आरंट वर्थ इट यार. मैं घर पे पार्टी कर लूँगी उससे अच्छा. प्लीज शेयर द लिंक ऑफ दैट ब्लैक क्रॉस बॉडी बैग. भाई साहब, उस बैग के लिए मुझे हर पोस्ट, हर स्टोरी के बाद एक मैसेज आता है. हर Q&A में मुझे उसकी लिंक के लिए पूछा जाता है. गाइज, आई डोंट हैव द लिंक. स्टीव मैडन का वो बैग था. यू कैन चेक देम आउट. उन्होंने एक थोड़ा नया वेरिएंट निकाला है इसका जो थोड़ा और चंकी सा है विद अ लिटिल मोर चेन्स एंड सिल्वर एम्बेलिशमेंट्स. सो यू कैन चेक दैट आउट. येस, ये महंगा है. येस, मैंने न्यू ईयर की सेल में अजियो से लिया था इस साल के स्टार्टिंग में. दिस वाज द गिफ्ट दैट आई गिफ्टेड माई सेल्फ एंड या दैट इज इट. मेरे पास लिंक नहीं है. I think another very common question was about how much I earn and how am I handling my finances. लोगों को लग रहा है कि अब I have rent to pay. How am I handling my finances and stuff? I know मेरा rent मैं already reveal कर चुकी हूँ. It is a lot obviously, and now that I'm trying to hire a team, so I have another मंथली बेसिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन मी. बट आई न्यू दिस कि ये मुझे गुड़गांव आके करना ही है. तो ये मैंने डिसीजन टू मूव आउट तभी लिया था जब आई वॉज वेरी वेरी श्योर कि हाँ, दिस इज द लिमिटेड, दिस इज द मिनिमम अमाउंट दैट आई विल बी मेकिंग लाइक ऑलमोस्ट रेगुलरली. एंड टच वुड उतना चलता रहा. इवन आफ्टर द ब्रेक आई थिंक आई हैव बीन डूइंग fine when it comes to the payment and like money wise. एक थोड़ा chunk of money मेरे दूसरे अकाउंट में हमेशा रहता है. वो savings में भी रहता ही है. So that even if any payment gets delayed, I still have money जिससे मैं रेंट पे कर पाऊंगी एंड सैलरी भी दे पाऊंगी मूविंग फॉरवर्ड. ऑल्सो जब से मैं गुड़गांव आई हूँ, पहले मैं उतना ध्यान नहीं देती जब मैं लखनऊ में थी बिकॉज आई डिड नॉट हैव अ मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन माई हेड कि मुझे रेंट वेंट देना. वो मेरा घर था. मैक्स टू मैक्स बस घर में मेंटेनेंस का, बिजली का घर देना होता था. तो बहुत सेविंग हो जाती थी उस टाइम पे. इसीलिए मैं बहुत ही आराम से घूम भी रही थी इस साल. अब आई थिंक 2023 में आई हैव टू कट डाउन ऑन माई ट्रिप्स. इस साल मैंने मजाक में 3 ट्रिप्स तो कर ही लिए एंड दे ऑल बिन वेरी कॉस्टली. बट इस बार मेरा बजट कम होता जाएगा थोड़ा थोड़ा. इन 2 महीने में आई हैव ऑल्सो टेकन इन अकाउंट कि मैं कितना स्प्लर्ज कर रही हूँ ऑन माई शॉपिंग. ये पहले मैं लखनऊ में नहीं करती थी बट नाउ आई हैव स्टार्टेड डूइंग दिस. सो आई डोंट थिंक सो आई हैव इट ऑल फिगर्ड आउट. बट हाँ, आई डू कीप इन अकाउंट मैं कितना हॉल्स पे एक्सपेंड कर रही हूँ. इफ़ यू नोटिस, मैंने इन 3 महीनों में सबसे कम हॉल्स बनाए अपनी पूरी YouTube जर्नी में. आई थिंक दैट वाज ऑल्सो बिकॉज आई कॉन्शियसली टुक दैट डिसीजन. ऑल्सो आई वॉज ऑन ब्रेक 1 महीना. तो अब मैं थोड़ा कैलकुलेट करके मंथली वीडियोज बनाती हूँ. सो या, दिस वॉज वन चेंज दैट आई हैव ब्रॉट एवर सिंस आई मूव टू गुड़गांव. नो क्वेश्चन, आई जस्ट फील proud seeing you doing stuff on your own. Adulting is scary and when I see you, I feel I'm looking at myself for some reason. Anyways, keep going. I'm proud of you. Oh my god, I will just cry right now. I know adulting has been so fucking hard. I think adulting का सबसे scary part for me has been कि मैं वैसे भी बहुत टाइम से घर से बाहर ही रहती थी. मैं जॉब के टाइम में भी बाहर ही रहती थी. But I always had somebody of my own level to go through that phase. इस बार it is only me. Thankfully, I had a friend. I had friends. Thankfully, in fact, मेरे friends ने मेरा घर सेटअप भी कराया है. मेरी wardrobe साक्षी ने सेटअप करी है. मेरी vanity अभी organize मेघना करके गई है. One night was all chaos. But yeah, adulting is very very hard, especially when you're doing it all alone. मेरा भाई is a kid.
कुछ भी बोलो, ही इज अ किड, ही इज अ सपोर्ट, बट ही इज अ किड एट द एंड ऑफ द डे. मुझे उसे सपोर्ट देना पड़ता है. आई एम द अडल्ट. अब 2 महीने बाद आई एम वे मोर कॉन्फिडेंट अबाउट माई थिंग्स. आई एम मच मोर एट पीस. आई नो मूविंग फॉरवर्ड आई विल हैव टू लिव अलोन इन दिस एंटायर हाउस एज वेल. सो उसके लिए भी आई एम फीलिंग ओके. आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट अबाउट इट. वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई आई वांटेड टू ग्रो माई टीम इसी महीने itself was बिकॉज पहले ये प्लान था कि जनवरी में ही आशु विल मूव आउट. सो आई फेल्ट कि अगर मेरे पूरे हफ्ते में 5 दिन आई विल हैव समबडी टू वर्क विद, दैट वुड बी अ गुड अमाउंट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन दैट आई माइट नीड एवरी डे. और वीकेंड्स में आई माइट हैंग आउट विद अदर पीपल, फ्रेंड्स को मिल लिया करूँगी वगैरह वगैरह. ये मेरा प्लान था सो दैट आई डोंट बिकम अ लोनर. नॉट दैट इट्स अ बैड थिंग, बट एक होता है ना, यू नीड पीपल अराउंड यू. आई एम दैट पर्सन हु नीड्स पीपल जिनकी एनर्जी से आई कैन वाइब विद, आई कैन फील एट होम विद देम. सो इसलिए मुझे एक्चुअली अपनी टीम मेंबर को भी चूज करने में बहुत टाइम लग रहा है बिकॉज आई एम जस्ट कन्फ्यूज कि किसकी एनर्जी के साथ मैं ज्यादा वाइब कर पाऊंगी, हु विल बी अ बेटर एडिशन टू द टीम. एंड थैंक यू रीतू, दिस वाज वेरी स्वीट. एंड आई थिंक इसके साथ आई एम गोना एंड दिस चैटी सा वीडियो. आई थिंक बहुत टाइम से ये सब पेंडिंग था. मुझे एक्चुअली किसी ने मैसेज किया था कि हे योर Q&A इज पेंडिंग. So I hope you're happy with this Q&A. I think अब मैंने सब कुछ बता दिया. A lot of things were थोड़ा मैं शेयर नहीं करी थी बिकॉज ऑनेस्टली ये साल हैज़ बिन अ लॉट. आई रियली होप आने वाला साल इज ग्रेट एंड फैंटास्टिक एंड जस्ट अ लिटिल मोर पीसफुल फॉर ऑल ऑफ अस. आई थिंक मैं इस साल इतना आउट ऑफ टच हो गई थी दैट आई स्टॉप डूइंग द सनफ्लावर स्क्वाड शाउट आउट ऑफ द वीडियो एज वेल. बट इस बार आई वॉन्ट टू डू इट. आई वॉन्ट टू स्टार्ट डूइंग इट फ्रॉम दिस वीडियो इटसेल्फ. सो इस बार का सनफ्लावर स्क्वाड शाउट आउट ऑफ द वीडियो गोज टू Aditi Chundawat. Thank you so much. I really hope I'm pronouncing your name correctly. Thank you so much for being so cute and so supportive. Yeah, and yes, I'm very excited for having a team as well. And yeah, that is all for this video. In case you want a shout out in the next video, just leave a comment below. अगर हम next year मिलेंगे, then happy new year guys. I really hope you're enjoying your holidays. I love this time because IT वाले लोगों को भी finally बहुत लंबी break छुट्टी मिल जाती है because सबके clients वगैरह US and all के होते हैं. तो this is that one week where nobody wants to work. So I really hope you're making the most out of this vacation and having a blast. And yeah, that is all. I'll see you next time. Bye.